We shall. Thank you so much. Very good evening to all the DTOs. Thank you for joining again. We present to you a very interesting session again tomorrow, which is on quality improvement control, risk analysis, and management. May I ask you, Dr. Harsha, what do you understand by risk analysis and its management? Yes, Devlina. So DTOs, whenever we plan something, और जैसे हम PDSC की planning भी करते हैं, there is always a possibility that what if something went wrong? There is always a chance of rain. So हम जब भी प्लानिंग करते हैं उसमें हम कितना भी टाइम डिवोट करते हैं, एक रिस्क हमेशा रहती है कि जैसा हमने प्लान किया है अगर वैसा नहीं हुआ या हमने जैसा डिजायर्ड रिजल्ट एक्सपेक्ट किया है वो अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा. इसलिए we must always keep in our mind at the time of planning the potential risks involved. We must take a step back after planning to visualize and see what are the potential risks that exist in the project and how I need to cover my project against it. So, when I'm doing risk analysis, yes, Dr. Manoj, you want to say something? Yeah, so actually, I want to share a story as we begin and our DTOs are coming in. And DTOs, you may have noticed that today our QICs, Devlina and Harsha, are leading the conversation. So when we talk about this risk analysis and management, मैं आपको एक story share करूँगा. About 3 years ago, as you remember very well, just before COVID, the city mayor called me into his office in Memphis. And this is where we're going to be celebrating Diwali, just the same place. Okay. And what he was seeing on the news was all of the world starting to shut down. And what he did was he brought me in, the entire executive committee from there, and he did a risk analysis. He said, what if we start getting a number of cases that are causing increased mortality in our city? What will we do? We thought about how we would be managing them with a hospital, how we will be managing them with flux of people coming in and not letting folks be able to go out. And so you all have been doing this, and it is a very real part of senior leadership. Every leader, every senior manager has to be prepared and ready for doing risk analysis and management. How you do it will make all the difference in the world. And today we will be sharing how the best of the best in the world and the best managers and leaders do it. So over to you again, Devlina and Harsha. Thank you for sharing this really important topic with us. Thank you so much. So what I understand from what you said, Dr. Manoj, that risk analysis, when we do risk analysis, we must always consider all the adverse events that can occur during executing the project, if I'm right. So Dr. Harsha, do you realize that even today in today's session, we can have some amount of risk? Would you like to highlight? Yes, Devlina, absolutely. जैसे DTOs आज का हमारा जूम सेशन है, हम आप तक लाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है. जैसे बहुत सारी प्लानिंग के साथ इसमें बहुत सारी रिस्क भी इन्वॉल्व होती है. सो आइडियली हमें क्या करना चाहिए? हमें इस रिस्क को एनालाइज करना चाहिए. उस पोटेंशियल थ्रेट्स को एनालाइज करने के बाद उसको मिनिमाइज करने के लिए मैनेज करना चाहिए. जैसे अगर मैं रिस्क की बात करूं तो आज एक रिस्क है कि अगर मेरा इंटरनेट बंद हो जाए या सडन टेक्निकल इशू आ जाए तो क्या होगा? क्या ये सेशन वहीं रुक जाएगा? नो DTOs, हमने इस रिस्क को आइडेंटिफाई किया, उसका एनालिसिस किया और उसे मैनेज करने के लिए हमने एक बैकअप तैयार किया. सो इस केस में अगर मेरे कोई टेक्निकल इशू आ जाता है मेरे एंड से या मेरा इंटरनेट बंद हो जाता है तो दैट बैकअप कैन टेक द सेशन फॉरवर्ड. सो इसी तरह से हमें किसी भी प्लानिंग में रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको मैनेज करना चाहिए ताकि होने वाले फेलियर को हम मिनिमाइज कर सकें. Absolutely correct, Harsha. What if I take an example of ACF? अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव केस फाइंडिंग कर रही हूँ, कंसीडर मैंने सारी प्लानिंग कर ली है. आई हैव डन ऑल द माइक्रो प्लानिंग. आई हैव अरेंज्ड ऑल द रिसोर्सेज. I have found out the vulnerable key population and mapped them. I have also started to do IC activities उनके लिए ताकि लोग सामने आए, लोग cooperate करें during my ACF.
इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, मैंने एनजीओज की हेल्प भी ली है सो दैट दे कैन प्रोवाइड अस वॉलंटियर्स एंड हेल्प इन sputum collection or screening. I have in fact done the arrangements for transportation facility also so that they can take the patients from one place to another. Do you think even after doing this, anything can go wrong in my ACF? Devlina, I think you have done all the possible planning you can do. You have done the micro planning. You have brought together all the possible resources which are required for a good ACF. So in my opinion, I don't think so कुछ गलत हो सकता है. सारी तैयारी हो चुकी है and मुझे लगता है कि हमारा ACF एक definite successful event होगा. Okay. So actually, I'll add this, Devlina and Harsha. Yes. Always we think and we plan and we are hopeful, but at the end, we'd never know. DTOs, as a leader, you know this very well, that anything can go wrong at any time. A VIP who's coming may not show up on time. There might be a traffic accident. And so, Devlina, tell us, this very practical example that you're saying. I have as a DTO, I have everything in place. And Yes, sir. then what am I supposed to do more? What is it that I as a DTO can mitigate, reduce my risk, and make sure that the program and my ACF is successful, the active case finding, which is going to determine the increased number of notifications that I have in my district with so much energy and time I'm putting in. How can I make it successful? So for that, I would like to show you one video. There Okay. was a patient. Let me show you this video of a patient who was supposed to provide her sputum sample. So let us see how she went through this. So there is a patient called Fatima. She went to give her sputum sample. जब वो स्पूटम सैंपल देने गई सर, तो उस टाइम पे उसको नहीं मालूम था कि स्पूटम कैसे देते हैं. उसने हेल्थ वर्कर से बोला कि उसको स्पूटम सैंपल देना है, तो उसको सिर्फ वो डब्बी दे दी एंड उसको नहीं समझ आया कि स्पूटम कैसे देंगे. तो उसने आसपास लोगों से पूछा. सो आसपास से लोगों ने बताया कि उसमें आप अपना सलाइवा दे दो या थूक दो एंड वापस कर दो. तो उसने वही करा. उसने इसमें सलाइवा दिया और उसने वो डब्बा बंद करके हेल्थ वर्कर को दे दिया. उसके बाद उसका टीबी का टेस्ट नेगेटिव आया, बट उसकी तबीयत और खराब होती गई. उसका इलाज नहीं हो पाया. So there was a little gap. If Harsha can identify this. यस देवलीना, एब्सोल्युटली. मुझे तो लगा कि इतनी प्लानिंग्स हो चुकी है एंड हमारा एसीएफ एक डेफिनेट सक्सेसफुल इवेंट होगा, बट ये एक छोटा सा गैप रह गया है, एक छोटे से रिस्क, और शायद इस रिस्क की वजह से हमारा पूरा एसीएफ भी फेल हो सकता था. Exactly. हमने सारे resources तैयार करे for our ACF, but we missed this small little gap. We couldn't identify the risk of not sensitizing our health worker, right? So if we would have sensitized our health worker properly, then हम इस risk को mitigate कर सकते थे and our risk of failure would have reduced. ऐसे ही छोटे छोटे गैप्स जब हमारे प्रोसीजर में रह जाते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए और इनका इम्पैक्ट समझने के लिए वी यूज FMEA tool, which is failure mode effect analysis, जो हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क्स, इट्स इफेक्ट वो कैसे हो सकता है एंड हाउ टू reduce its impact on our outcome. What you're seeing on your Let's screen. actually, Devlina, if you can go back on that Yes, sir. slide for a minute. So DTOs, हम आपको बहुत सारे acronyms सिखाते हैं. The most famous one, PDSA. क्यों करते हैं हम ये? Because जो senior level academics हैं, जो managers हैं, leaders हैं, उन्होंने find out करा है, they've discovered that this is an effective way of better communicating and understanding these core elements which will make a difference. So what we have learned is that in a situation where we are going to be put in, where there is going to be risk mitigation that needs to happen, there is a way to solve that problem. And if you ask in any management school what FMEA is, they will know perfectly well. And what we want to do is to introduce you to this. Now, we don't expect you to be able to carry this out
हमें हमको मालूम है कि ये पूरा कैरी आउट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आपको एक एग्जाम्पल के अंदर से देखा जाएगा तो यू विल एंजॉय इट thoroughly. सो देवलीना, टेक अस स्टेप बाय स्टेप कि ये FMEA क्या है, what is this, and put it into our real life, put it into an example that you and I and others and especially our DTOs can understand, please. राइट. सो जैसे हमने देखा, देयर वाज अ प्रोसेस ऑफ स्पूटम कलेक्शन है, जी. राइट. इसमें पोटेंशियल फेलियर मोड, यानी कि ये कैसे फेल होगा, अगर मेरे स्पूटम की जगह सलाइवा कलेक्ट हो जाए तो इट इज गोइंग टू फेल. एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट, मेरा स्पूटम का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा. एंड अगर ये सलाइवा कलेक्ट होता है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू फेल, देयरफॉर सीवियरिटी वुड बी क्वाइट हाई. It would be definitely high. Therefore, I have rated it 10. I'm going to explain how I am rating these numbers in the upcoming slides. My potential. Devlina, just a Yes, question. ये 10 जो है, is a 10 on a scorecard of 1 to 10? Yes. 1 being the least and 10 being the most severe. Yes, 10 being the highest. Okay, okay. There is a proper ranking which I'm going to show further while we go ahead. Okay. Then once I have identified the effect of the failure, now I am here to identify what will be the cause of this failure. What can cause this failure? If the patients who are supposed to give sputum, उनको अगर नहीं मालूम हो कि कैसे sputum देते हैं, they might not have been aware about it, then it would lead to bad quality of sputum. इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि अब मैंने रिस्क एनालाइज कर लिया है, नाउ आई नीड टू आइडेंटिफाई हाउ कैन आई मैनेज द रिस्क ऑफ फेलियर. इसको कंट्रोल करने के लिए आई कैन यूज सम कंट्रोल मेजर्स, जिसको हम यूजुअली पीडीएसए में इंटरवेंशन बोलते हैं, आफ्टर आइडेंटिफाइंग आवर पोटेंशियल लूप होल्स. इस पर्टिकुलर केस में वी कैन सेंसिटाइज द हेल्थ वर्कर, जो हमारे पेशेंट को समझा सके कि स्पूटम कैसे दिया जा सकता है. सो नाउ आई हैव आइडेंटिफाइड माय रिस्क, its effect on the outcome, and I have also identified how to mitigate the risk. So let us see, अगर हमारी पेशेंट फातिमा के केस में ये हुआ होता, we would have identified the risk, and अगर हमने उसको मिटिगेट करने के लिए हेल्थ वर्कर को समझाया होता कि पेशेंट को कैसे सेंसिटाइज करते हैं, then what would have been the other side of the story. So what I'm seeing here for a second is, Devlina, that you're taking a very qualitative, sort of abstract ideas and events, and now you're quantifying it into a number. I see that Yes, sir. you're done is you've graded them into severity, occurrence, and you are able to take a very difficult situation and be able to put it into a number that we can quantitatively see. Okay, so let's see if we've applied it and what happens. Yeah, let's play it and Yes. let's listen to the voices. जब डॉक्टर ने मुझे टीबी के टेस्ट करवाने Hi, का you can turn the volume up. मुझे घबराहट हो रही थी. फिर क्लिनिक पे उन्होंने मुझे एक डिबिया दी और पूछा कि क्या आपने कभी बलगम का टेस्ट दिया है. जब मैंने उससे बताया कि मुझे बलगम निकालना नहीं आता, तो उसने मेरी मदद की. उसने मुझे समझाया कि बलगम कैसे निकालते हैं और मेरी बात अच्छी तरह सुनी, और उससे बात करके मेरी हिचकिचाहट काफ़ी कम हो गई और उसके बताए गए तरीके से मैंने बलगम निकाल लिया. जब टेस्ट आया तो मुझे पता चला कि मुझे टीबी है और फ़ौरन मेरा इलाज शुरू हो गया. अगर क्लिनिक की वर्कर मेरी मदद नहीं करती तो मैं बलगम नहीं निकाल पाती. वर्कर के अच्छी तरह समझाने से मेरी बीमारी का पता चला, मेरा इलाज शुरू हुआ और अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ. So you see here how one small weak link could have led to such a big failure, and how analyzing the risk of its failure at the correct time and trying to understand and finding a mitigation solution for this, which was very simple, just resensitizing your health workers, led to the reduction of your risk of failure. So let us move ahead and let me show you how I rated in the previous slides the risk that you identified, which was sputum collection. When there was this process of sputum collection, तो अगर sputum मेरा गलत collect होता है तो इसकी severity of failure क्या होगी, would be very high. As I showed you,
from 1 to 10, there was the ranking, and it was very high that it would fail. Therefore, the ranking was 10. इसका occurrence, अगर मैं नहीं train करती हूँ अपने health worker को, तो इसका occurrence almost unavoidable होगा. I will definitely get bad sputum samples. And इसका detection would be low likelihood of detection because एक बार हो गया collection, उसके बाद मुझे मालूम पड़ेगा. On the other hand, अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ ACF का, जहाँ पे हमारा लैब टेक्नीशियन किसी कारण से नहीं आ पाता है, मे बी ही इज एब्सेंट और ही हैज गॉन ऑन लीव सडनली, सो इसकी सीवियरिटी ऑफ फेलियर होगी वेरी हाई बिकॉज देयर विल बी नो LT टू प्रोसेस आवर सैंपल्स. Then इसकी occurrence number would be moderate occasion, not necessary that it happens every time or it can happen very often. It would be quite a rare occasion. And detection number would be moderate likelihood of detection. The moment he asks for leave or he goes on a holiday, we'll be able to know. So this is how we do the ranking of our risks that are there in a process. So Devlina, one question I have. Yes, ma'am. In these two cases, both relating to an ACF activity, in one case, the sputum collection process required sensitization. And here is a potential another risk कि कोई lab technician छुट्टी पे जाता है, तो हमें ये assess करना होगा कि हमारे पास क्या solution है, कितने टाइम के लिए वो छुट्टी जा रहा है, और अगर इमरजेंसी है, देना ही है छुट्टी, तो कितना दिन तक हम सैंपल को होल्ड कर सकते हैं, या इस तरीके से. सो डेफिनेटली ये दो रिस्क में ऊपर वाला रिस्क ज्यादा है और नीचे वाला रिस्क कम है. तो ये आपने बहुत अच्छी तरीके से ये ACF एक्टिविटी का ही एग्जाम्पल लेकर हमें समझाया. तो ये हमेशा और भी चीजें हो सकती हैं जो बार बार हमको सोचना पड़ेगा, करना चाहिए. मैम, इट इज नॉट रियली नेसेसरी कि आप ये पूरा चार्ट लेके मैट्रिक्स लेके बैठे during identify a risk. DTOs have so much years of experience in the field that they can judge it on their own which risk has a higher potential of affecting the outcome. They just need to keep 3 factors in mind, which Harsha is going to explain ahead. Keeping these 3 factors in mind can help them understand the risk better and mitigate them in a better way. So handing over to you, Harsha. यस देवलीना, जैसा कि आपने बताया कि हमें रिस्क को मैनेज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए FMEA का मैट्रिक्स एक बहुत अच्छा टूल है. सो हमें इस मैट्रिक्स में काम करते वक्त 3 क्राइटेरियाज को ध्यान देना है, एंड दीज 3 क्राइटेरियाज आर अकरेंस, सीवियरिटी एंड डिटेक्शन. सो आइए जानते हैं ये तीनों क्या होते हैं. सो अगर हम अकरेंस की बात करें, सो अकरेंस इज बेसिकली हाउ फ्रीक्वेंटली और हाउ मेनी टाइम्स अ फेलियर इज अकरिंग आफ्टर प्लानिंग. सीवियरिटी का मतलब होता है कि अगर फेलियर हो रहा है तो उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है. एंड इफ हम डिटेक्शन की बात करते हैं, तो डिटेक्शन मींस हाउ इजीली दैट फेलियर कैन बी डिटेक्टेड. सो बेस्ड ऑन दीज 3 important criteria, our FMEA tool has been planned. Wow. So I have really an like this, Devlina and Harsha. I Yes. really like how you have taken a very complex situation. Aapne jo complexity of putting a whole program together, and there's a risk in everything. Even so, in the next half hour, 45 minutes, I have to then from here I have to leave and go to the airport. Even there, I'm calculating what if the car gets a flat tire. The frequency of that is low. Severity could be severe because I will miss my flight. And so what do? I make sure to give an extra period of time. Detection will be very easy. A car has a flat tire. And so in our minds, as we do any sets of activities, we are doing this inherently. Then why are we talking about this, DTOs? Because when we begin to formalize it, and when there is a very complex situation, जो अपने control में readily नहीं होती है, अपन अगर ये more FMEA analysis उस पे करते हैं, then what we find is there is a better way of helping to solve that problem. And so we are familiarizing, helping you better see this, and it makes it so much better when a complex situation arises. So yes, over So to now you, I Dev. would like to invite Dr. Sanjay Harbade. Dr. Sanjay Harbade from Parabani district. He will only explain his own PDSA, and then we will see how his PDSA has actually used the elements of FMEA to reduce the risks of failure.
So Dr. Sanjay Harbade, are you here, sir? Yes, ma'am. Yes. Okay. So please go ahead with the presentation. Yes, ma'am. Good evening, everyone. Myself, Dr. Sanjay Harbade, MO DTC Parbani. We found out our problem in our district that the presumptive examination जो हमारा मानवत और पालम तालुका था, तो उसमें लो प्रिजम्पटिव रेट था। मानवत का जो है 312 है और पालम का 274। our aim statement was by tracking ये 2 टीयू जो है हमारे, तो वो हम 10% से इंक्रीज करने का हमने टारगेट रखा। उसमें हमने मानवत का जो पहले था उसमें 10% इंक्रीज करेंगे और पालम का भी 10% हम इंक्रीज करेंगे। तो मानवत का जो 312 था वो हम 344 तक जाएंगे और पालम का 274 था तो वो 302 तक जाएगा। इसके लिए हमने सेंसिटाइजेशन ऑफ द आशा वर्कर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और हेल्थ वर्कर जो है फील्ड पे, इनका सेंसिटाइजेशन बाय व्हाट्सएप मैसेजेस। इवन वी हैव given letter of DHOs to increase the sputum sample, and also we have made some videos. That videos also post on the WhatsApp groups, and these WhatsApp groups, our ASHA coordinator, she will send all the messages to ASHA WhatsApp groups. This was our aim statement. Then our procedure process measure was the number of WhatsApp messages sent in the Manod Taluka group. Also, the number of WhatsApp messages sent in the Palam Taluka group, and number of times sensitization videos was shared in the ASHA groups, and number of ASHA sensitization. We have 95 ASHAs in the Manod TU and 75 in the Palam TU. Outcome measure, we can measure our outcomes by the number of presumptive examination in the Manwat। वो अपने जब प्रोसेस मेजर्स करते हैं पीडीएस से करते हैं तो उसके बाद कितना होता है और नंबर ऑफ केसेस उसमें से कितने पॉजिटिव आते हैं। सेम लाइक इन द पालम प्रिजम्पटिव एग्जामिनेशन कितना होता है और उसमें से पॉजिटिव कितने आते हैं। हमारे टीम में जो है तो मैं डॉक्टर संजय हरबड़े, उसके बाद में डाटा एंट्री ऑपरेटर शशि डोलालकर है, एसटीएस मानवत का है जो कि डाटा कलेक्शन करता है, तो वो नजीब शेख है, और एसटीएस पालम जो है पांडुरंग राठौड़ है। अगर हम इधर चार्ट में देखते हैं तो इंटरवेंशन हमने अक्टूबर और नवंबर में चालू किया था। अगर हम शीट में देखते हैं कि अगस्त में मानवत टीयू का जो है तो कुछ भी इंटरवेंशन करते नहीं थे, यानी व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं थे, सेंसिटाइजेशन नहीं था। लेकिन जब से हमने पीडीएस साइकिल इंप्लीमेंट किया तब से फिर पर वीक को एक मैसेज व्हाट्सएप पे जा रहा था आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर के ग्रुप से। सेम लाइक पालम पे कभी जाता था कभी नहीं जाता था, लेकिन ये पीडीएस से इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने हर वीक को 3 या 2 मैसेज, कभी एक मैसेज ऐसा उनके ग्रुप पे भी पालम टीयू में भी हम फॉरवर्ड कर देते। सेम लाइक सेंसिटाइजेशन ऑफ आशा पहले कभी कभी होता था, जो वीडियो हम बनाते थे या स्टेट से आते थे तो उसमें से कभी भेजते थे कभी नहीं, लेकिन उसके बाद में हम रेगुलर भेज रहे हैं। अभी नवंबर का पालम का टीयू का डाटा नहीं आया क्योंकि अभी वो स्ट्राइक पे है, इसलिए उन्होंने नवंबर का डाटा अभी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक्चुअल फील्ड में काम चालू है, सिर्फ डाटा कलेक्शन पालम का बाकी है।
Okay, thank you so much, Dr. Sanjay Harbade, sir. Excellent, excellent, Dr. Sanjay. And आपने बहुत अच्छी तरह से Devlina, I process would, measures, sir, I would process just measures and request outcome measures. for him to present the outcome measures. Yes, no, this is excellent. And we can see the outcome measures that clearly increase the number of presumptive sputums over time. You've gone up to 145, 213, and baseline 274, target 302. And then you've got to 213 so far, and then more to go. Till October में सर, Yes, नवंबर yes. का डाटा बाकी है पालम का, तो One of the things, yes. In graphs also we can see the same. Dr. Sanjay, if you allow me, I'll just run Yes. through. So Yes. here we are also having data of the referrals that they are tracking from both the TUs, the PHCs, CHCs, and the rural hospitals that are there. So all the referrals that are coming from there and active surveillance, the data is recorded here. Thank you. Fabulous. Thank you Very so good. much. Sir, I just want to ask you one thing, Dr. Sanjay. If you, okay, let me share my screen. Sir, you have made the aim statement. Just give me a moment. Your aim statement, सर जो आपने बनाया है, आपने specify करा है particularly कि आप कौन से 2 TUs में presumptive examination बढ़ाना चाहते हैं, कितनी percentage से बढ़ाना चाहते हैं, कितने टाइम में, और उसके लिए आप क्या-क्या चीजें यानी कि इंटरवेंशंस आप करेंगे. तो ये एक बहुत ही स्मार्ट एम स्टेटमेंट है विच इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. तो अगर आप इस एम स्टेटमेंट में सर सिर्फ इतना लिखते कि आपको 10% प्रिजम्पटिव एग्जामिनेशन बढ़ाना है, और आप नहीं लिखते कि कहाँ पे बढ़ाना है, कब तक बढ़ाना है, यानी कि नवंबर तक बढ़ाना है या दिसंबर तक बढ़ाना है, और इसके लिए क्या क्या चीजें आपको करनी है, तो आपको लगता है सर आप सक्सेसफुल हो पाते, आपको टीम आपको सपोर्ट कर पाती इस चीज में? नहीं मैडम, अगर ये स्मार्ट नहीं होता तो वो सक्सेस नहीं होता. राइट, तो मतलब अगर आप ये नहीं करते सर तो आपका रिस्क ऑफ फेलियर बढ़ जाता, बट बाय बिल्डिंग अ स्मार्ट एम स्टेटमेंट आपका रिस्क ऑफ फेलियर से रिड्यूस हो गया है. Yes, ma'am. Okay, thank you so much, sir. Thank you for presentation. And that's really important. The risk of failure goes down. Another way to decrease risk is also for, if you looked at your team, if you look at the team, lots of times when you do is what you build and put people on the team, like 1 or 2 ASHA workers, even if they join in remotely. अगर आप एक आशा वर्कर जो really engaged है, उसको आप अपनी टीम में बुला लो, and you make them part of the team, all the ASHA workers then will say, अरे ये already इनकी टीम में है. So that reduces the risk. And then if there's any possibility of some event happening with the ASHA workers that will affect your presumptive sputum, you will know that quickly as opposed to over time. But perfectly fine. Those are great ideas. Okay, thank you, sir. Thank you, Dr. Sanjay. Next, we have Dr. Dinkar. Harsha, can you invite Dr. Dinkar for his presentation? Yes, Devlina, absolutely. I would like to welcome Dr. Dinkar, DTO Buldana, for his PDSA presentation. Welcome, Good evening, sir. ma'am. Good evening, all. When PDSA started, the problem we identified in our district, low private notification and staff engagement is less with the private practitioner. Private labs, lack of sensitization of private practitioners. So by identifying this problem, we have made an statement that in district Buldana, we will increase private notification by 10% within 2 months, using non-registered private practitioner to be converted to registered, training of STS and TBHV, STLS, and NICSHA ID generating training labs and X-ray facility, NTP visits to the private practitioners. After that, in process measure, we have a number of 90 staff visits done to the private practitioner fortnightly, a number of newly registered private practitioners, number of training for NICSHA ID in private labs,
number of training for Niksha ID and X-ray centers also. And our outcome measures is number of private sector notification. And we have, after that we have made a team. In our team, myself and my PPM coordinator Siddheshwar Solanki, then STS Rajendra Suradkar and STLS Mukesh Genge. We made a 10 and after that the team we have divided. I divided the three of them. We have 13 TUs. We have divided all TUs to my STS, STLS, and PPM coordinator will supervise, and I also supervise them. And intervention was started on at baseline. We have 190 and September 190 was baseline हमारा था. And after that जो intervention start करने के बाद जो हो गया 162 हो गया, but it is above 162 due to strike of NHM workers. The data we are not getting data or not registering on Nikshay, but it is definitely increased in my district due to this PDSA tool, due to this work we had done. And please. And Thank you so much, sir. Thank you so much. We've understood your PDSA very well. थैंक यू सर. इट इज अ गुड पीडीएसए, वेरी गुड पीडीएसए सर. सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. Yes, ma'am. जैसे आपने बताया कि आपने अपनी टीम को प्रॉपरली उनका रोल डेलीगेट किया था. Yes, हमने ma'am. देखा है आपने क्लियरली अपने प्रोसेस मेजर्स बनाए हैं और Yes, एक स्ट्रॉन्ग एंड इन्वॉल्विंग टीम भी बनाई है. तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपने अपनी टीम को प्रॉपरली टास्क या रोल डेलीगेट नहीं किए होते या उन्हें प्रॉपरली नहीं बताया होता कि उन्हें क्या काम करना है, कहाँ करना है, तो क्या ये एक रिस्क होता हमारे पीडीएसए की सक्सेस के लिए? डेफिनेटली रिस्क होता मैम. अगर उनको मैं नहीं बताता तो डेफिनेटली रिस्क होता. सो सर इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ पीडीएसए आपने ऑलरेडी फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस यानी कि FMEA किया है और अपने रिस्क को कवर किया है और अपने प्रोजेक्ट के सक्सेस के चांसेस बनाए हैं, राइट Yes, सर? ma'am. Definitely. ओके सर, थैंक यू. Thank you, ma'am. Excellent. This Dr. is actually Harsha, a really good, very really good. good example of how a PDSA brings in a lot of the other elements of how to be successful in a given activity, reducing risk, increasing awareness, quantitatively looking at data. So what the PDSA in effect is multitudes of these ideas, concepts, which in isolation are important, but it incorporates all of those very important ideas in order to be successful. So excellent work. Thank you, sir. So now we invite Dr. Nikhil Lahane from Akola district. And we would like to call upon Kritika, if we can invite Dr. Nikhil for the presentation. Dr. Nikhil, CTO Akola. Sir, you will present your PDSA, please. Sir, आप म्यूट पे हैं. Yes, thank you. Ma'am, in Akola district, problem is low public notification, lack of awareness, less referral from ASHA. My aim statement is in Akola District Municipal Corporation, we will increase public notification by 10% within 2 months. Increase awareness activity, sensitization of ASHA, PHI staff, one-day training of all medical officer. My process measure is number of sensitization done for ASHA 176. Then process measure is number of cases referred from ASHA. Number of sensitization done for PHI staff is 95. Then number of cases referred from PHI staff. Outcome measure is number of cases notified in public sector. My team, myself, Dr. Nikhil, CTO, DPC Dr. Hemant, DPC Hemant, DO Shubhangi Jadhav, STS Baberwal, STS Akash.
Pratik, can you explain his run chart very briefly, and Yes, then you ma'am. can. Ma'am, after sensitization of Asha, we get excellent result. Before sensitization of Asha, then number of cases notified in public cases. After sensitization, we get excellent result. 72. Baseline, my baseline was 72. Target 79. Achievement 67 up to first day for November. Okay. Thank you so much, sir. सर थैंक यू सो मच बट मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि जैसे आपने एम स्टेटमेंट बनाया उसमें बहुत स्मार्टली आपने हर चीज को मेंशन किया कि आप आशास को टारगेट करेंगे, आप रेफरल करेंगे और पीएचआई स्टाफ को सेंसिटाइज करेंगे। आपने टीम को भी ऐसे ही डिवाइड किया, आपने टीयूज वाइज भी वैसे ही डिवीजन किया। सर एक Yes, ma'am. क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अगर आपने गैप क्या एनालाइज किया था इसके अंदर? मैम आशा को सेंसिटाइज करने के बाद तो और पहले सेंसिटाइजेशन का आपने गैप फाइनलाइज किया, तो अगर गैप आप ये फाइनलाइज नहीं करते तो आपका पीडीएस से रन नहीं हो पाता, नहीं हो पाता मैम, पीडीएस से तो फेल्यूर आपको इफेक्ट नहीं मिल पाता, राइट सर? कुछ भी। हाँ, यस मैम तो इफेक्टिव। दैट इज आपने एफएमई किया, आपने अपना रिस्क को पहले ही एनालाइज किया, आपने गैप यस के यस एनालिसिस किया एंड यस देन आपने पीडीएस से रन किया, जिसका पीडीएस से आउटर इफेक्ट हम आउटकम पे भी देख सकते हैं। देवलिया, कैन वी गो टू द रन यस चार्ट प्लीज? Yes. We can see that the baseline was 72, the target sir has chosen is 79 and the achievement till date is 67. यस मैम। So this is ये इसीलिए हुआ क्योंकि हम गैप को एनालाइज गैप कर को पाए। आइडेंटिफाई एनालाइज कर पाए मैम। Yes, yes sir. Thank you so much sir. Thank you for your presentation. Thank you. Thank you so much, Dr. Nikhil. This really shows various ways, again, how we are able to use the PDSA. And what you are doing is in ways mastering. Each one of you, by doing the PDSA, are able to master these skill sets. एक चीज होती है कि अपन एकेडमिकली बैठे सीखते हैं, आप बैंगलोर जाएं, आप दिल्ली जाएं, वहाँ पे आपको लेक्चर कोई दे दे कि PDSA क्या है, पर दूसरी चीज होती है कि आप PDSA को इस्तेमाल करें. That makes all the difference in the world in being successful. And this is what we're trying to help you better incorporate in your practice, in your day-to-day activities as a leader and a manager. So great work. Yes sir, जैसे कि हमारा पीडीएसए टूल हम बात करते हैं, एक मैजिकल टूल है। सो ये एक पीडीएसए टूल ऑलरेडी एड्रेस और एम्बेड्स करता है रिस्क एनालिसिस को, रिस्क मैनेजमेंट को और एफएमईए टूल को। सर ये काम कैसे करता है? जैसे जब हम पीडीएसए प्लानिंग करते हैं, अपना एक स्मार्ट एम स्टेटमेंट बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस मैप बनाते हैं, उसमें गैप्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये गैप्स हैं क्या? व्हाट आर दीज गैप्स? These gaps are actually risk, which if not taken into consideration might result in the complete failure of the project. So in this way, with the help of PDSA, we are actually doing the risk analysis. Similarly, after process mapping, we clearly define our process measures and outcome measure so that we can fill those gaps which we found in process map. So in this way, we are doing the risk management. So this magical tool addresses and embeds all the elements of risk analysis, management, and FMEA tool. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Superb. Great. So from risk management and analysis, एक बार मालूम पड़ गया problem है, Ms. Jaya, how do we now address that problem? So help us communicate this. How should a leader communicate the risk to a broader group? And again, I will say this, again, a story during COVID, all of the politicians that we were working with, the mayors of the city and the other leaders, what they did was to communicate the risk of COVID to the general population. They brought in the doctors to work in and convey the risk, because the public trusts the doctors to be able to convey the risk. So let's hear more about how to convey the risk. Ms. Jaya.
Thank you so much, Dr. Manoj. I'm so excited after hearing the 3 PDSA presentations that our DTOs are already embedded with the tools of management that we normally learn in 2 years of an MBA course. And I think this is the power of PDSA. The way our counselors, our QICs are hand holding them to walk them through these tools and techniques, I think it's fantastic. And so really there are 3 outcomes that we wanted to have as a learning for us in today's discussions. We first wanted to understand what are the levels of risk in a project activity and how to identify them. What tools do we have to really manage this? What are the strategies that we can have to ensure success? And the FMEA came up as a fabulous tool also to compare the level of risk. And as leaders, what kind of supportive leadership do we have to plan for? And now, once we have done this, we know that alone, neither me as a DTO or CTO, nor my team alone, as a group of public health professionals, can really eliminate TB. So, how do we effectively communicate the risks and its management is what we will discuss in the next 20 minutes or so. So what really is risk communication? अब बताना तो पड़ेगा लोगों को, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ एपिडेमिक हुआ है, कुछ हमारी ACF एक्टिविटी प्लानिंग हो रही है, तो हमें तैयार तो करना पड़ेगा. So it's a dynamic process of sharing and responding to information about a public health. And Dr. Manoj, you mentioned about COVID, and I can also share a little story about how we were getting the health ministry's guidelines, and there were a bunch of us who are very actively involved in reaching out through radio and television. So we were promptly translating these guidelines, new guidelines that were issued time and time again, and then broadcasting them in the entire country through the community radio network. And that So that made all the difference in the world in how to do this in a way that will impact the public. So the steps, you have to be listening and responding. You have to be sharing information. You have to be building trust. That's why the political leaders had the doctors be part of that, and then engaging the general public was so critical, and to make sure that the community is involved. So, Ms. Jaya, these are all of the core elements which go into this communication piece, which oftentimes I think we may not pay that much attention to. What do you think? Ekdam, sir. I'll invite Dr. Avesh and Dr. Anjita one by one. First, I'll invite Dr. Avesh to share their experience of engaging, because risk communication is not just simply about issuing an office order or informing something to our team. It is also about the people, the community, and the social response to something that we want to address. So, Dr. Avesh? I'm not sure if he has been able to join yet. Okay. No problem. Dr. Ranjita? Yeah? Is Dr. Ranjita with us? She may not be there. Okay. No. So, yeah. So, sir, what I had really understood was, when we engage with a community, now let us take an example of how many DTOs do information awareness sessions in schools. Can I just have a show of hands from the DTOs कि कितने लोग schools में जाके awareness करते हैं, और क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों का ability है अपने family के साथ direct connect करने का. So that to me is a very powerful way of engaging in risk communication, where you as an expert are talking to children
who have to be involved in supporting. Yes, Dr. Archana. Would you like to come in and share? Yeah, go ahead, Dr. Archana. Yes, You can yes, speak. ma'am. Yeah, I cannot on the video, but I Yeah, will yeah, just share. please go ahead. Yeah. Actually, the children who are, in the school, students from grade 5 or 4, we are sensitizing them because they are the, very good communicator for their parents. Even if we are going in community and we are telling about risk and prophylaxis and prevention of TB, but the when children says something to their parents, they listen very carefully and they understand that if children are saying this, that means it's a really good thing for us and we should follow it. Yeah. So Fabulous, that's the fabulous. experience, and that's why we are sensitizing all the public schools as well as we have reached many private schools and colleges also, ma'am. Yeah, thank you. Fabulous, fabulous. Dr. Ram Rawlani also, CTO Jalgaon, he is also done, and Dr. Sanjay. I'd like you both to take a moment Yes, good evening, madam. with Yes, communities please. to bring good practice. Yeah, go ahead, Dr. Ram. यस सर, गुड इवनिंग सर. सर और ये सब जो है हम लोग भी करते ही हैं स्कूल्स में जाके. एज द मैडम सेड दैट whatever the children learn in the school, they carry that into the homes and tell to their parents and their friends also. And competitions also we take in the schools about tuberculosis. And बीच में हम लोग ने प्रभात फेरी जो बोलते हैं मॉर्निंग में, जो 26 जनवरी 15 अगस्त को डिस्ट्रीब्यूट स्कूल चिल्ड्रंस बिस्किट पैकेट्स एंड रैली उनकी निकालते हैं. उसमें बैनर्स देते हैं, हाउ टू स्टॉप टीबी वगैरह, टीबी के अवेयरनेस के बैनर्स रहते हैं. ये सब हम लोग करते हैं सर. Thank you, Dr. Ram. Thank you. Dr. And Sanjay? Dr. Sanjay also had a comment, and then and then we'll move on. यस सर, हमारे पास आरबीएस के टीम है मैडम. Yes, तो sir. आरबीएस के टीम को हमने सेंसिटाइज किए वाला है, मेडिकल ऑफिसर्स और उनका स्टाफ है. हाँ. तो उनको हमने टीबी के बारे में ट्रेनिंग दिया है, और वो उनका स्कूल विजिट जब रहता है तो वहां पर वो जाके स्टूडेंट को टीबी के बारे में पहले तो समझाते हैं, बाद में कंपटीशन भी होते हैं, उसमें ऐसे राइटिंग है, डिबेट्स है, रंगोली स्पर्धा है. तो उसके लिए पीआईपी में 500 रुपए बजट भी है, वो भी हम उनको देते हैं. यानी तो कुछ प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसमें से वो. That is engaging everyone to fight the disease. Fabulous. Thank you so much. Let's move ahead, Dr. Manoj. So what we do really is to ensure that advice and opinions and guidelines are able to reach the community, to the people who require that advice in real time. And when we are experts, and if we keep the knowledge to ourselves and we are not powerful in communicating, then people may not understand it. So we need to put it in simpler language, in ways that people can understand. So this is what risk communication does. It prevents spread of a disease if possible. It helps to create awareness of an ensuing activity, like an ACF is planned. We have the opportunity to make people aware that an ACF is planned in this time, and more people need to come. So that is another way in which we can engage. So I think the core elements that you talked about is that you are able to reduce the gap between an expert and the public. Yes. So CTOs think of the risk communication as reducing that gap between the general public and an expert. And you are, as the DTO, the middleman, the middle person that is going to be helping to do that. We get lots of expertise, advice from CTD, from WHO, from researchers at our institutions. We bring that to the general public. So that's how we are able to communicate. That's excellent. Yes. Yes, and also, Dr. Manoj, we do it in a language, in a way which is sensitive to the culture. So let's move ahead and see what is it that we do and how do we do it. We do it by in-person meetings.
We reach out, we give press releases where required, we share information, we get IEC materials that we communicate, we translate some of these videos into our local videos and release them through internet. बहुत सारे opportunities हैं हमारे पास reach out के. हाँ, पर इसमें भी एक रिस्क है सर. एक रिस्क और है. क्या है ना कि कई बारी लोग छोटी बात का बहुत बतंगड़ भी बना देते हैं. और सबसे बढ़िया तो हमारा सिटीजन जर्नलिज्म है ना सर. कुछ कोई बात है तो व्हाट्सएप मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो हवा जैसे फैल जाती है. जितना ज्यादा तेजी से एपिडेमिक नहीं फैल सकता, उससे ज्यादा तेजी से फैल जाता है ना सर. That's a really important concept on how we manage even the negative misinformation. Yes. So DTOs, you may be thinking कि and before actually the case was कि ठीक है हम उनको कैसे sensitize करें, कैसे awareness करें, उनको risk reduction कैसे करें. Now lots of times you have to do that, and you saw the same thing with the anti-vax effect that was there. Tomorrow we never know, we may have someone saying कि TB medicine नहीं लेना है, कि हमको PCR detection nahi karwana hai. You know, we never know of all of these things that may come. Humko handheld X-ray se X-ray nahi karwana hai. So as a leader, you must become aware that keep the messaging, the narrative in control. And this is what risk communication is about. Really about that understanding what the perception is at all the times, managing the rumors, and being consistent with your communication. Now, you may know this in back of your mind, but putting it up front to the team is important. हाँ, और एक और बात है, छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों को टेक savvy डिफॉल्ट में हो जाना पड़ेगा, बिकॉज अगला जनरेशन is born with these social media kits and tools, and therefore we have to go beyond the normal IEC communication as our medium. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारे टीम मेंबर्स को क्या क्या रिस्क कम्युनिकेशन में फायदे हैं उसको समझ के अवेयरनेस कर रहा है. प्रोटेक्टिव बिहेवियर, इतना तक कि अगर हम ये कहें कि क्या क्या मिस इन्फॉर्मेशन होती है, क्या इंफॉर्मेशन सही है, ये भी एक बहुत अच्छा क्विज बना सकते हैं. FAQ टाइप कुछ क्विज बनाए. दैट वे वी कैन एनकरेज प्रोटेक्टिव बिहेवियर. वी कैन हैव इन एग्जीबिशंस एंड पब्लिक गैदरिंग्स, ऐसे हो सकता है. वी कैन इन्फॉर्म टू बिल्ड अप नॉलेज ऑन हैजर्ड्स एंड रिस्क्स, टू promote acceptance of risks and management. अब जैसे अगर कहीं एक घर में किसी को टीबी हो गया, तो इसका ये नहीं मतलब है पूरा समाज उसको बहिष्कार कर दे. If you are able to create this understanding, and then you can address, this is one of the biggest challenges, don't you think, Dr. Manoj? The social stigma around TB Absolutely. continues to be the biggest challenge. Yeah, biggest challenge in our TB's campaign to increase awareness. Absolutely. Let's go a little further, sir, and understand what all it serves to do. It also warns of trigger action. Did someone No, go ahead. Yeah, continue. Yeah. So it also, we need to assure audiences about all the anxiety issues that are there around managing TB, to improve our trust, which Dr. Manoj already talked about, and to create dialogues and understanding. अगर किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है कि डीटीओ को बुलाएं और कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ Q&A सेशन करें, एक छोटा सा अवेयरनेस करें, उसके बाद गुड 20-30 मिनट्स का Q&A करें, आस्क ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, and then build it up into an FAQ, put it in your own local language and share it. कि ये डिस्कशन के क्वेश्चंस, डाउट अगर कॉलेज के बच्चों के पास आया, श्योर इनफ दिस माइट बी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट अदर्स आल्सो हैव. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है. At this point, I'd like to invite Dr. Badiuddin. Sir, it's so wonderful to have you.
Hello, good Dr. evening to all. Badruddin. Yes, Yeah. ma'am. Good evening to all. Good evening, sir. Good evening. Yeah, ma'am. या सर मेरे को बताइए कि हमने जिस तरीके से ये कॉन्सेप्ट्स का रिस्क का है कम्युनिकेशन का जो हमने शेयर किया, मुझे मालूम है सर कि आपका एंगेजमेंट बहुत एक्साइटिंग और डीप है। थोड़ा सा अपने ये एलिमेंट्स को बाकी सब लोगों को भी थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से बताएं सर। Yeah, ma'am. I'll share one experience during MR campaign, ma'am. हाँ. What happened? जब मैं as a immunization officer I was working. 2018 में मैम MR campaign launch हुआ था. That was मतलब rolled out throughout India. उसमें 9th 10th के स्टूडेंट्स को मैम MR वैक्सीनेशन देना था. तो regarding that, we were getting resistance from school officials also as well as from parents also, ma'am. तो उसमें जैसे उनका जो कंसेप्ट मतलब जो परसेप्शन ये थे कि अरे ऑलरेडी हमारे पीडियाट्रिशियन ने हमारे बच्चों को टीका दे दिया है. रिगार्डिंग सेकंड थिंग एडवर्स इफेक्ट फॉलोड बाय इम्यूनाइजेशन कि स्कूल दिस इज नॉट द सेफ प्लेस टू मतलब गिव वैक्सीनेशन, वहाँ ऐसे प्रिकॉशंस वगैरह सब फॉलो नहीं होंगे. इस तरह का जो मतलब उनके माइंड में थे चीजें, ये जो उनका परसेप्शन था कि रिगार्डिंग वैक्सीनेशन वो बहुत निगेटिव था. सेकेंड थिंग कि अब इससे इनफर्टिलिटी वगैरह भी होती है, ये वैक्सीनेशन सेफ नहीं है, इस तरह से. तो फॉर दैट मतलब व्हाट वी डिड मैम, हमने उनको फिर पेरेंट्स मीटिंग मतलब कॉल किया है. पेरेंट्स को बुला के उनका जो परसेप्शन है वो चेंज करवाया कि भी दिस इज द सेफेस्ट वैक्सीन, यही इंडिया में ही मतलब ये किया है, ये अभी एलिमिनेशन फेज के लिए है, इसके अपने को बहुत ज्यादा फायदे हैं. उससे भी अगर ये काम नहीं हो रहा था तो वी कॉल्ड अप मैम ऑल रिलीजियस लीडर्स. फॉर एग्जाम्पल मौलाना मौलवीज को बुलवाया, फादर्स को बुलाया फ्रॉम चर्च, यहाँ गुरुद्वारे से हमने मतलब गुरुजी को बुलवाया, भंते जी को बुलवाया, यहाँ से बुलाकर मैम कम्युनिटी अवेयरनेस उनके साथ सेशन रखा, उनको मतलब चेंज ये करने के लिए कि कंसेप्ट जो कम्युनिटी का रिगार्डिंग उसमें जो था वो चेंज करने के लिए मैम. फिर बाद में उनका जैसे ही मतलब इफेक्ट हो गया, लोगों ने मतलब रिलीजियस लीडर का मीटिंग हो गया, पेरेंट्स मीटिंग हो गया, देन आफ्टर दैट मतलब वी स्टार्टेड गेटिंग रिस्पांस फ्रॉम मतलब ऑल स्कूल्स, स्टूडेंट्स वगैरह ने भी लेना मतलब ऐसा शुरू किया मैम. तो ये क्या है, एक बिहेवियर चेंज मतलब जो रहता है वो हमें मतलब करने के लिए एफर्ट्स तो लेनी पड़ती है थ्रू ऑल मीडियाज. फॉर एग्जांपल हमने उस चीज के लिए प्रिंट मीडिया का यूज किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब हेल्प ली हमने, लोकल पेपर्स में मतलब आर्टिकल्स वगैरह दिए हैं करे, उसके लिए व्हाट्सएप पे अलग से मैसेजेस वगैरह बनवाया था. ये सब चीजें करने के बाद पेरेंट्स जब मीटिंग हुई है तो उसमें मतलब लोगों ने उनका माइंडसेट चेंज किया, उसके बाद में हमें एमआर कैंपेन में सक्सेस मिला. थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, जो ड्यूरेशन ये था तो उससे काफी समय थोड़ा सा 2-3 महीने ज्यादा लग गया, लेकिन हमें उसमें सक्सेस मिला है. थैंक यू सो मच डॉक्टर बदियुद्दीन. I want आपने to take yeah. Yes, So Dr. Manoj. Zaya, I'm going to just take 2 minutes, and I just say that what Dr. Badiuddin said was incorporate all of these core elements. He perceived the risk. He saw what the risk was. He contextualized, put it into the setting of there, and he got the local leaders, religious leaders, school leaders, others to come in, and had a consistent messaging that was there, and he appealed to the heart. He appealed to the young folks. He appealed to the folks. And what WHO has shown is that if you do this risk management, risk mitigation, risk communication through trust, transparency, early announcement, listening to the population, and then planning, that's what works. And it's been there for decades and decades, we've learned. So excellent example, Dr. Badiuddin, and thank you for sharing that with us. Thank you, sir. So just moving on, sir, I'll just take two more slides and then I'll wrap it up, sir. There are some risks. We know that the risks we mentioned about, we have to contain against rumors. We have to be more online, more on social networks ourselves and our teams to ensure misinformation is not, getting accelerated and creating more trouble than, help. So experts के बजाय सब लोग 24 hour journalism में जो लगे हैं, उनके ऊपर हमें सतर्क रहना पड़ेगा. So this is the new level of challenge that we people face when we are doing. तो हमें थोड़ा सा active, proactive and responsive
hona padega. This is a new kind of thing that we are having. So, sir, I'll just close here and request you to kindly, conclude our session and have a photo session for attendance, sir. So wonderful. Thank you, everyone. What a great, great session. And thank you, Devleena and Harsha. You did a fabulous job. And really thank all the DTOs. Really, really enjoyable to have you with us and then sharing your experience. That's what makes it so, so valuable. And then again, the 3 DTOs who did their PDSAs, we are looking forward to so many more PDSAs and keep them up. That is how we will be measuring our success together. Thank you, everyone. Yes. Thank you, Dr. Sanjay Harbade, Dr. Dinkar, Dr. Prafulla. Thank you, ma'am. Oh, Dr. Nikhil Lahani. Thank you, ma'am. Yeah, thank you so much. Thank you so much. And thanks to our supporters, USAID, CTD, and the union, and all our QICs who have done a fabulous job, and all the DTOs who have been so encouraging and so marvelous. You're all supportive leaders. हमें एक छोटा सा रिकैप करना था कि हमने फेस टू फेस मीटिंग के बाद क्या किया, तो मैं सिर्फ 1 मिनट में ये पूछना चाहूंगी, फेस टू फेस के बाद एनर्जी लेवल डिफरेंट है ना थोड़ा सा, है कि नहीं? Yes or no? Just say yes or no. Put your hand up. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yeah. So we look forward to listening to more listening from you about your PDSA results. क्योंकि अब हमारा टाइम है जब हम कम बात करें, हम ज्यादा सुने आप लोगों के काम का. So thank you so much. Thank you, Edwin. Sorry we are about a couple of minutes late, but I think we are enjoying this session. Thank you very much. We can close the session now, I think. Yeah. Thank you, madam. Thank you. Thank you.